what's up and welcome back to a video. Today I have made these macarons and they look amazing. You guys should definitely try these, and if you want to know the recipe, keep on watching this video. Assalamu alaikum. आज मैंने macarons बनाए और बहुत मजे के लगे। अगर आपको ये recipe चाहिए आप इस वीडियो को देख लेना। This recipe we're going to be needing 125 grams of powdered sugar. हमें चाहिए 125 grams powdered sugar, 15 grams of egg whites, 13 gram अंडे की सफेदी, 41 grams of water, 41 gram pani, 100 grams of granulated sugar, 100 gram granulated sugar, 41 grams of egg whites, 41 grams ande ki safedi, 125 grams of almond flour, 125 grams badam ka flour. Lastly, food coloring or food coloring. This can vary depending on how strong you want your colors to be. Iska quantity vary kar sakta hai depending on कि आपको कितना strong color चाहिए. First, we're gonna sift our dry ingredients, so that's our almond flour and our powdered sugar. पहले हम अपना dry ingredients sift करेंगे, तो हमारा almond flour और powdered sugar होगा. Grams of egg whites into our dry ingredients. अब हम अपना 13 grams egg whites अपने dry ingredients में डालेंगे. Fold our egg whites into our dry mixture like so. अब हम अपना egg whites अपने dry mixture में fold करेंगे like so. Now we're going to take our water and put it on a medium-low heat and add our sugar in it and wait for it to dissolve. अब हम अपने पानी के अंदर sugar डालेंगे और इसको dissolve करने का wait करेंगे. You have to make sure the temperature of your sugar and water mixture has to stay at 160 degrees Fahrenheit, so that's around 80 degrees Celsius. So ये make sure करना है कि आपका पानी का temperature 160 degrees Fahrenheit या 80 degrees Celsius में रहे. Sugar syrup has reached 160 degrees, so I'm taking it off the heat. अब मेरा sugar syrup 160 degrees हो गया और मैं इसको heat से उतार रही हूँ. Here I have my 41 grams of egg whites. इधर मेरे पास अपने 41 grams egg whites है और अब हम इनको whip करेंगे. And now we're gonna whip these. Now that our eggs are whipped, we're gonna add in our sugar syrup into it that we just made. अब हमारे eggs whip हो गए. मैं इसमें अपना sugar syrup डाल रही हूँ जो अभी हमने बनाया था. A tip that you have to remember is that as soon as your sugar syrup is off the heat, you have to add it into your egg whites. एक tip आपको याद रखनी है कि जब आपका sugar syrup चूल्हे से उतर जाए, आपको directly egg whites के अंदर डालना है. Over here I have my dry ingredients with the egg whites that we mixed in and my sugar syrup and egg white mixture. Either मेरे पास अपने sugar syrup or egg white mixture or dry ingredients or egg whites. I'm going to fold my dry ingredients in with my egg white and sugar mixture. अब मैं अपने dry ingredients को egg white और sugar mixture में fold करूँगी. I'm gonna add in my food coloring. अब मैं अपना food coloring अंदर डाल रही हूँ. Now that our mixture is ready, I'm gonna take my piping bag. My piping bag has a round tip at the end and I'm going to fill in my mixture into it. अब मैं अपने piping bag के अंदर डालूंगी अपना mixture और मेरे piping bag की tip एक round tip है, तो आपको mixture करना कि आपका भी ऐसा हो. Making these macarons in my active fryer and in the oven, so feel free to choose whichever one you're comfortable with. मैं अपना ये macarons active fryer में बनाऊंगी और oven में, तो जो भी आप comfortable हो आप उसमें बना सकते हो. In my active fryer with baking paper, and what you're going to do with this is that you're going to hold it at a 90-degree angle and you're just going to push down on your piping bag and the circle will just form on its own. मैंने अपने active fryer को baking paper से line कर लिया. इसके लिए आपको 90-degree angle पे hold करना है piping bag को और नीचे की तरफ push करना है. This is a trick for the people who are making these in an oven. If you have these silicone sheets, they have like a circular guideline on it which will tell you how big you need your macarons to be, and it has a circle on the inside and on the outside, so it gives you a controlled shape.
अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो फिर आप ये सिलिकॉन मोल्ड पैक कर सकते हो। इसमें वो एक छोटा सर्कल अंदर होता है, एक बड़ा सर्कल बाहर, तो एक कंट्रोल्ड शेप और साइज़ आपका रहता है सर्कल का। Okay, so these are done. I'm going to pop these in the oven, and you have to make sure these are exactly at 100 degrees Fahrenheit, so around 50 degrees Celsius, and you do not want to overcook it or it may burn, and you really don't want that. And you need to make sure that it's for 20 minutes and 20 minutes only. अब मेरे हो गया और मैं इनको ओवन में रख रही हूँ exactly 100 degrees Fahrenheit पे, so around 50 degrees Celsius. आपको ये make sure करना है कि ये 20 minutes के लिए सिर्फ आप अंदर रखें, वरना ये burn हो जाएंगे और आपको वो नहीं चाहिए। Onto the actifier done, हमारा actifier वाला हो गया। So there are two ways you can go from here. One way is do the classic way and put a buttercream frosting in the middle. The other way is doing it my way and putting white chocolate on top, and it's totally delicious, so I'm gonna do the white chocolate way. अब आप इधर से दो ways जा सकते हैं। आप classic buttercream frosting वाला बना सकते हैं, या आप इनको white chocolate से cover कर सकते हैं ऊपर से। The ones from our oven done. हमारे oven वाले अब हो गया। I have converted all my melted white chocolate into a piping bag, and I'm just dripping it onto my macarons like so. मैंने अपनी white chocolate एक piping bag में डाल दिया और मैं उसके macarons के ऊपर ऐसे डाल रही हूँ। Our macarons तैयार हो गए और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। Our macarons are ready and they look amazing. Our macarons are ready and they look amazing. If you guys like this recipe, tell me in the comments down below and give this video a big thumbs up. Please like, subscribe, and share my videos, and go follow me on Instagram, Facebook, TikTok, and Twitter. Bye! हमारे macarons तैयार हो गए और बहुत मज़े के लग रहे हैं। अगर आपको इनकी रेसिपी अच्छी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को बिग थम्स अप दें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझे Instagram, Facebook, TikTok और Twitter पे फॉलो करें। Bye!